हिंदू एक्चुअली दोनों की थोड़ा बायसनेस है। हिंदू थोड़ा बायस है लेफ्टिस्ट साइड। हिंदू थोड़ा बायसनेस रखता है लेफ्टिस्ट साइड पे। और मैंने आपको बताया द प्रेफर्ड पोजीशन ऑफ राइटिंग आंसर्स इज ऑलवेज लेफ्ट सेंटर। लेफ्ट सेंटर सबसे बड़ी पोजीशन होती है। यू आर नॉट compromising लिबर्टी बट यू आर ऑल्सो गिविंग ड्यू कंसिडरेशन टू वेलफेयर। Yes, good evening everyone. So let us start. Today we will also do some editorials. So you people have done something previous class. The editorial page. So let's see quickly. So when I will see, then I will see. आपने कुछ लिखा है? देखा। ओके, ये है गिरीश कुबेर। कौन सा वाला है ये? गिरीश कुबेर। ओके, द मेन आर्टिकल। ठीक है जी। कौन तो few things that you have written are already known. If you may have done the classroom program, ये पहले ही करवाया गया होगा. These things are already, we do numerous case studies in reservation. Under reservation, we do numerous case study. One of the very important one is that there is a rise of tendency among upper caste to claim themselves as lower caste. They don't want to become lower caste. Nobody wants to become lower caste. But yes, benefits. Yes, a strong tendency. That's why EWS reservation. It was implemented in 1990s also by Narasimha Rao government. But Supreme Court declined EWS reservation. But this time, Supreme Court accepted EWS reservation. What changed? Politics changed. Acceptance changed. और ये हम नोटिस कर रहे हैं ऑल डोमिनेंट कम्युनिटी। फॉर एग्जांपल मणिपुर। मणिपुर में द एंटायर ड्रामा टुक प्लेस बिकॉज द मेजॉरिटी मेतीज, the majority community of Manipur, Metis, Hindus, they are claiming that they should also get reservation. Reason is the same that we did in previous class. The structural unemployment leading to leading to disguised unemployment, disguised employment leading to small businesses, self-employment, and government job preparation. So out of the three options that we already know, people are structurally unemployed, leading to disguised employment in agriculture, leading to self-employment in small businesses, and ultimately to government job preparation. Out of these two are out of your control. By everyone may not have agriculture. That is the argument Girish Kubir has argued, that with increasing population, decreasing agriculture income, the agriculture become less attractive. So agriculture is less attractive. Starting a business is very hard. Self-employment, first of all, does not give you good margin of productivity, and also it is a hard profession. तो बचा क्या हैंड में? गवर्नमेंट जॉब्स। यही प्रीवियस में भी हमने समझा था। हाउएवर प्रीवियस में ही स्पेशली फोकस्ड ऑन द आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पे थोड़ा सा अलग है बिकॉज गवर्नमेंट जॉब्स आर रिमेनिंग। So agriculture productivity is declining as argued by this person, moment of reckoning article, and self-employment is something you can try, and your somebody in your family is already trying it. Bacha government job, but because there is privatization, with privatization, government jobs are reducing at a very rapid pace, and because of this, whatever pie is left, मान लेते हैं out of 100 jobs this year, there will be not more than 20 jobs which will be government. There was a time before 1991 when out of 199 jobs used to be government jobs. Now there are only 20 jobs which are government jobs of various natures. So what you want is their reduced pie. You want a share of it.
That the change that has come. Earlier, the upper caste never demanded reservation. They were against reservation actually. They were talking about merit. देखो मैंने आपको हमेशा बोला everything depends upon the utility. These upper caste were demanding we should run over merit. अभी भी some upper caste demands. Upper caste says, but these are those castes who do not have reservation. If these people who are saying that merit should be the first criteria, if you say, okay, fine, let me give you ST reservation, they are like, okay, fine, let's do it. They will be the first person to accept this argument. They are saying against reservation because it hurts them. Because 20 jobs are there out of 100 government jobs, and they want a bigger pie now. And they feel, yeah, 50% reservation is gone. 10% EWS has also come. Remaining 40%, out of that 40%, there is too much competition. So they also want the pie. That's why the Marathas in Maharashtra, the Patidar in Gujarat, the Jats in Haryana, the Metis in Manipur, these all are dominant communities. They also want reservation because the reduced pie, they want a part. अब imagine करते हैं, there would be out of 100 jobs, 90 jobs are government. So you will never ask for reservation because you will get something or other. You may not get Indian services, but you will get state services. If not state services, then somebody else equally good. So you are craving for reservation not because you want reservation, but because you want the opportunity of a job, particularly government job. And why you want government job? Previous day's article tells this. Two reasons: status, and second, social security. Because Modi government has brought reform. Like I told you, all labor laws has been liberalized. Because of this, the attractiveness of labor, the attractiveness of private jobs. Understand, private means there's a peculiar structure. The lower jobs in private, they're least paying. The upper jobs in private are the highest paying jobs. Even a mid-level employee in a private sector will earn more than the cabinet secretary of India. What the cabinet secretary gets, I think he gets around 2.5 lakh or something, maybe including benefits, maybe 3 lakhs. ठीक है? हाँ क्या किसको हाँ of course everyone get and if you're a mid-level employee, only a mid-level employee, not a bigger one. Just my friend, he's just started, I think it has been 7 or 8 years. He's in Royal Bank of Scotland. He is getting 4 lakh rupees per month, and he's just starting thing. He's just in mid-level and he is to grow. अभी तो 4 lakh तो आप मान के चलिए, it is just he is just as old as me. मैं तो बहुत late start किया jobs because I was preparing, he was not. So he already is having 4 lakh rupees per month, Royal Bank of Scotland, and that is the salary you get. Cabinet secretary's highest salary is this. Government with the highest salary is 4 lakh, while he is getting 4 lakh at the mid level. When he will rise, it will reach to crores of rupees. This is the problem in private. Private, mein, as you grow up, there is no limit to salary, no limit, virtually no limit. But at lower level, where the majority of the employee lies, understand, government jobs are attractive for lower level employees. Because private में आप काम करेंगे, they will give you at most 20,000 rupees and make you work 10 hours without this facility, that facility. Government will pay you equally amount. Government, I think the minimum salary in government is 40,000. So if you are a starting level employee, starting person in government, pay commission metrics, you will get 40,000 plus. You will get additional government facility like health benefit, ye benefit, wo benefit. So you are like, I want government job. Understand again, people are craving for government job, but at low level only. Higher level pe the craving is less, because higher level pe you are earning well, you are earning very well than you can ever earn. And that, understand, this is, I am talking about legitimate money. करप्शन से नहीं बोल रहा हूँ, करप्शन इज अ डिफरेंट पार्ट. ऐसा नहीं प्राइवेट में करप्शन है. आई ऑलवेज टोल्ड यू, प्राइवेट में देयर इज मोर करप्शन देन द गवर्नमेंट. बट द डिफरेंस हियर इज, प्राइवेट में करप्शन इज कंसंट्रेटेड एट टॉप, द टॉप लेवल. जैसे फॉर एग्जांपल बायजूस कैसे गिरा? Because the Ravindra, whatever the person was who created, he was a educationist, he was a teacher. He did not understand the nuances of business. He had a management team, the top management. There is some person, okay, who worked in Byju's at good level. He told me the thing was they took money from क्या बोलते हैं, World Bank and other for education purposes. Education में often provide money, and it was embezzled. So even a teacher who was in Byju's have got 5 to 10 crore rupees of flat. Even a teacher, सोचिए अब मैनेजमेंट ने कितना कमाया होगा. Baiju may have gone, and the majority of employees of Baiju's will be suffering, but the top management of Baiju's is ultra rich, and they will always be ultra rich. That's how private sector works. Private sector corruption is very big. You cannot imagine the quantum.
I think we discussed 2008 crisis. $7 trillion in 2008. Today's India's economy is 3 trillion. Means all 140 crore Indians put together produce only 3 trillion of economy. And the only banking of that sector got 7 trillion, more than double of India's entire economy. And that entire money was embezzled by whom? Of course, the rich of the rich. This is also becoming a concern. So understand the people who are fighting for government job, fighting for reservation like Marathas and all. These are the people who lack what? Who lack skills. Understand, मैं फिर कह रहा हूँ प्राइवेट में there is no dearth of jobs, even good paying jobs, but it requires skills. Government job में skills are not required, particularly at low level jobs. Low level jobs are majorly clerical jobs. Like for example, you become a TT, ticket checker or whatever, TC in railways. You have to clear that pathetic exam of railway, and you do a lot of corruption because you have seen, I believe you have seen TT's power. You go to a train, आधे लोग ऐसे चढ़ जाते हैं, and then they're like कुछ adjust करवा दो हमारा, ठीक है, then you earn 100 rupees, 150 rupees, whatever you earn, and that is get distributed to everyone. वो एक अलग बात है, but the thing is low level jobs में government is still the attractive position. That previous day's article was only talking about low level job. High level job में money is not a consideration, power is a consideration. Majorly money is a consideration. If you have remember, you come to Saturday seminar, so that Narayanan person, he said the same thing. If you want to do corruption, become rich, then become a low level officer. If you're at high level, there is more work and less remuneration. I am telling you, SHO is more richer than a DSP. It is always the scenario. SHO is more richer than DSP because SHO is at the bottom level. He goes into the field, he knows the people. DSP को कौन जानता है? He whatever he sends to DSP, DSP को उतना पता होता है. DSP also gets the part. मैं ये नहीं कह रहा घूस नहीं ली, मैं कह रहा हूँ whatever जो low level पे corruption है, the small bureaucracy, the small people, they earn disproportionate money than the higher level. मैं ये कह रहा हूँ उन पे फोकस भी कम होता है, आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है. देखिए यूर डिस्ट्रिक्ट यूर डीएम, तो इफ यू डू एनीथिंग बैड इट्स टू मच कंसंट्रेशन ऑफ फोकस. ये डीएम करप्ट है, ठीक है. स्मॉल एम्प्लॉयज को कौन देख रहा है? देयर सो मेनी एम्प्लॉयज, किसको पता लग रहा है? टॉप लेवल एम्प्लॉयज आर ओनली 1% ऑफ द एंटायर ब्यूरोक्रेसी. 99% ब्यूरोक्रेसी इज नॉट टॉप लेवल. द मेजरली ऑफ देम आर employees, low level bureaucracy, and there is too much corruption there. Most important, there is too much money there, particularly in terms of social security is also there. So people who lack structural skill are often looking for government job. Again, I am excluding Indian services. मैं exclude करके बोल रहा हूँ. State PCS and UPSC को मैं हटा के बोल रहा हूँ. Remaining of the job, state PCS and UPSC is not more than 1%. I'm talking about the remaining 90%, 99% of bureaucracy that is non-PCS, non-UPSC. In that the structural component is missing. उसके लिए मोदी गवर्नमेंट प्रीवियस आर्टिकल में हमने समझा था, प्रीवियस डे में मोदी गवर्नमेंट स्टार्टेड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, but still that attraction of government jobs and aura. And why the aura? I told you the reason. He did not tell that. Why there is aura of government job? Because respect and all. Why? Because your family. Because majority of your family members were born in government era. Just for example, even today, if you go to a rural area, even a SHO command more respect. But if you come in urban area, even the SP, DSP किसी को परवाह नहीं होती. Urban areas में you see cars flying here with 3 stars. कार पे 3 स्टार लगे होते हैं. That means it is the highest rank IPS officer, DGP level. Single car, 1 gunner and 1 driver. If you that person, that DGP is in a state, he will have a kafila of at least 8 to 9 vehicles. यहाँ पे he has a single car and that too is running in a traffic. No clearing of vehicle for him. उसी ट्रैफिक में उसे भी चलना है. People are going like this, ठीक है. आगे से कट मारते हैं, बाइकें निकाल रहे हैं, ठीक है. And he was like, क्या हुआ मेरी औरा का? हाँ वही मैं कह रहा हूँ. स्टेट में there is more respect. Indian services में because understand, because the people of the states, particularly in rural areas, they still have the colonial hangover. So Indian services, this was made by Britishers. So that aura of British power, the aura of British authority is still there. और यही हमने, if you remember, पंचायत में समझा था. If you really want to empower panchayat, first you have to do away with the position of district magistrate. DM and SDM must go. Otherwise, those power will never go to the panchayat. And if those power will never go to the panchayat, then the panchayati raj will never be empowered. I'm not saying there will be no corruption in panchayat. There will be.
but people's governance is always better than some so-called intellectual governance, something we call meritocracy. There is one democracy, rule of the people. There is one called meritocracy, rule of the meritorious people. But मैंने आपको हमेशा समझाया, merit is not only because of your efforts. Merit is a composite. Efforts तो हर कोई लगाता है. Clear this much? So maybe this in this context this is written. तो थोड़ा मैं समझा दे, एक बार देखते हैं what are the argument he has made. So Girish Kuber has written an article. Maratha reservation पे it is there. Let's see what is his argument. इसमें कोई केस वगैरह मेंशन नहीं था क्या? इंद्र सानी तो हमें पता है, उसके अलावा बस वही था. तो इट मींस यू ऑलरेडी नो 80% ऑफ दिस आर्टिकल, मुझे लग रहा है. दैट्स व्हाई यू हैव एक्सट्रैक्टेड हाउ मेनी लाइंस? 3 लाइंस. नहीं, उसी का भी हो. पॉलिटिकल पार्ट शुड नॉट बी काउंटेड अगर ही इज टॉकिंग अबाउट बीजेपी कांग्रेस, बट यू मस्ट नो, थोड़ा समझदारी होती है, लेकिन बट डू नॉट राइट दैट नाउ. नोट्स में डू नॉट ऐड दैट बीजेपी डिड दिस, कांग्रेस डिड दिस. दैट इज नॉट योर पर्पस. लेट्स सी क्विकली. हाँ देखिए, ये तो है. व्हाट इज सेइंग इट इज कॉमन. द प्रॉब्लम विद रिजर्वेशन इज यू कैन गिव इट इजीली, यू कैन नॉट विड्रॉ इट इजीली. हाँ बस बिल्कुल वही वाली बात है. सो पॉपुलेशन जिनकी कम है, ये कौन सा फैक्टर है? उनके लिए वी कैन, रिजर्वेशन इज नॉट द पैरामीटर. वी कैन प्रोवाइड देम सम एडिशनल बेनिफिट लाइक माइनॉरिटी स्टेटस. माइनॉरिटी स्टेटस मींस गवर्नमेंट स्पेशल, जैसे जियो पारसी. Parsis are reducing in India. Parsis में reproduction rate is total fertility rate we call. If you remember TFR, TFR in Parsis is very low. So government of India has a scheme called Geo Parsi. Geo Parsi में they are trying to propagate or preserve or increase the population of Parsis. So these kind of scheme ठीक है. Reservation again मैं repeat करूँ, reservation in education is more better than jobs. Always remember, reservation in education is better than jobs. If you see, all the community that have really empowered are the community that use educational reservation, because I have always told you education empowers you, it broadens your horizon, and that's why a lot of people face problem when they come for UPSC preparation. ठीक है, तब उन्हें बड़ी बड़ी बातें आ जाती हैं. Then they find it hard to adjust in their rural background. ये बहुत लोगों के साथ होता है. You come to Delhi, you see a different world, because Delhi is a cosmopolitan city. तो यहाँ पे there is a different society, different environment. Then you learn a few scholars, few thinkers. फिर घर में जाके you are like, this is not done. ठीक है, the घूंघट that you are saying, I cannot have that now. ठीक है, तो ये हो जाता है. फाइन, गलत दोनों ही नहीं है, because they are arguing from their viewpoint, you are arguing from your viewpoint. You have experienced something they could not. अब जैसे मैंने आपको पहले बताया, फॉर एग्जांपल दिस वेरी सुप्रीम कोर्ट डिनाइड एलजीबीटी राइट वंस अपॉन अ टाइम. नाउ दिस टाइम इट गेव बट चेंज, जजशिप चेंज. द अर्लियर जज वर एम्बेडेड इन द मोरालिटी ऑफ पास्ट. they gave judgment according to their values of past. The current judges, they are embedded in the morality of today. The future, जैसे इस time Supreme Court has denied right to marriage to LGBT, but I can guarantee few years later पक्का मिल जाएगा. When new judgeship will come, the current students, okay, अभी तो जज नहीं है, the students in current classes who are studying, when they will become judge, when they will around 10 to 20 years, when they will reach to Supreme Court, they will deliver a judgment and they will say that LGBT community has a right to marry. That's how society slowly progress. किनको पकड़ के मार देंगे? ऐसे देखे पकड़ के मार देंगे, ऐसे कैसे मार देंगे? सरकार किस लिए है? नहीं, मैं डिनाई नहीं कर रहा, दिस थिंग्स कैन हैपन, बट ऐसे होने को तो सती के खिलाफ भी था. व्हेन आरएम रॉय फॉट अगेंस्ट सती, हिज ओन फैमिली प्रोटेस्टेड. मैं हमेशा कहता हूँ, वी कैन नॉट वेट सोसाइटी टू इवॉल्व. हम वेट नहीं कर सकते सोसाइटी का. भाई सोसाइटी, व्हेन सोसाइटी विल एग्री. फॉर एग्जांपल, वी मेड 18 इयर्स द एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल एंड 21 फॉर बॉयज. इसके बावजूद भी अप टिल टुडे, नाउ इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू नियर जीरो, बट यू कैन से अप टिल टुडे देयर वाज अ लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स मैरिड बिफोर 18. अभी भी 16 से 18 मैरिज काफी कॉमन है. इट स्टिल इट इज वेरी कॉमन. जबकि वी हैव मेड अ लॉ. इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इफ द स्टेट, इफ द सोसाइटी डज नॉट इम्प्रूव, हम लॉ ही नहीं लाएंगे. नाउ गवर्नमेंट इज कंटेम्पलेटिंग ऑफ इंक्रीजिंग इट टू 21. अगेन गुड मेजर.
Society will not accept it. I can guarantee you will make 21, still the 18 to 21, they will be huge marriages. But over time, it will change. So judgment to लाना पड़ेगा. Again, we cannot wait for the society to evolve. ठीक है, some stimulus are required. Maratha forming 33% of Maharashtra population are the strongest of all communities. ये तो मैंने आपको बता ही दिया था. This is a new phenomenon of reservation. The strongest communities are demanding reservation. The same way OBC got reservation. Reservation politics, I told you. OBC got reservation the same manner. There was land reform. Land reforms transferred land to the majority OBCs. The purpose of land reform was giving land to the lower community, particularly the untouchables, the STs and SCs, and to distribute land among landless laborer. But हुआ क्या? The caste which were not upper caste but were not lower caste as well, somewhere in between, they got all the land. And then government started Green Revolution. Green Revolution, government did recognize farmer based on land ownership. So those people who got the land, the OBC particularly, they got the benefit of the Green Revolution as well, and they emerged as the most significant political power. When you have the political power, you force the government to do what you want. Same thing is happening here now. Upper caste are asserting control. EWS reservation came because of the same reason. किसका? लेकिन जिनको फायदा लेना था वो ले चुके हैं इन द बिगिनिंग ईयर्स, क्योंकि आप ईडब्ल्यू सी कट ऑफ देखिए बहुत कम थी. स्टार्टिंग 2 to 3 years देयर वाज वेरी लो कट ऑफ. आई थिंक इट वाज इवन लोअर देन एससी एसटी था, मुझे याद है फर्स्ट ईयर में. एससी से ज़्यादा था, ओबीसी से कम था. इट्स अ बिग अचीवमेंट. ठीक है. बट एनीवे, मैंने आपको बताया ओबीसी में देयर आर सो मैनी पीपल नाउ डेज, सो मैनी पीपल. इवन ओबीसी कट ऑफ इन स्टेट्स इज हायर देन जनरल. इनका नहीं, ऐसा लोअर कम्युनिटी कंसिडर्ड मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन, नो डिनायल. सेंसस, हाँ. हाँ बिल्कुल होना चाहिए. क्या क्या दुख क्यों, किस बात के लिए? तो आप परसेंटेज और एब्सोल्यूट नंबर में आप फर्क कर रहे हैं. नहीं, 0.6 हो गई ना, ओवरऑल की 0.6 हो गई. अब फर्क समझिए, 100 पीपल का पॉइंट 1.5 कितना बताया आपने? 1.2 of 100 people and 0.6 of 10,000 people, which is bigger? परसेंटेज एब्सोल्यूट में फर्क होता है. So now the population has also increased. In 1931 population, today's population, I think it has gone. 1931 में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, we were around 60 crore people. Now we are, sorry, uh, 60 crores आए थे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है. Now we are 140 crore. We have gone more than twice. ठीक है, तो biggest achievement India has got. चलिए फाइन. 85% लगभग. हाँ होंगे, बिल्कुल होंगे. जो भी अपर कास्ट इज ऑलवेज अपर कास्ट, तो इट इज अ नोन फैक्ट. दैट्स व्हाई बीएसपी का नाम क्या है? बीएसपी इज अ पार्टी इन यूपी. इट्स नेम इज बहुजन समाज पार्टी. बहुजन समाज, बहुजन मीन्स मेजोरिटी कम्युनिटी. माइनॉरिटी नहीं, बहुजन मीन्स मेजोरिटी. तो इसका नाम ही बहुजन समाज पार्टी इसलिए था बिकॉज इट आर्ग्यूड दैट वी आर द मेजोरिटी कम्युनिटी. दैट्स अ बहुजन समाज पार्टी, अ कम्युनिटी फॉर मेजोरिटी कम्युनिटी. एक सेकंड.
कटरीना कैफ का नाम कटरीना कैफ थोड़ी ना है। और कटरीना कैफ उसकी स्टोरी सर्च करना, उसे स्टोरी और नाम दिया गया था, वो अभी मानहानि का दावा कर देगी, ठीक है। उसे स्टोरी और कहानी दी गई थी। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव अ स्टोरी। देखिए क्या होता है, व्हेन यू आर नोबडी नोस, बट व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग पॉपुलैरिटी ना, यू आर गिवन अ नेम, यू आर गिवन एन आइडेंटिटी एंड यू गिवन अ बैक स्टोरी। तो कटरीना कैफ का सर्च करना कि हाउ शी गॉट द नेम एंड व्हाट इज द बैक स्टोरी। यूपीएससी में आएगा नहीं, बट इट्स इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड हाउ यू प्ले पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में जैसे नरेंद्र मोदी की स्टोरी है ना, दैट ही यूज्ड टू सेल टी। अब किसे पता कौन टी बेचता था, ठीक है। अब हु नोज, अब कौन जा सकता है इन, फॉर एग्जांपल देयर इज अ स्टोरी, ही यूज्ड टू कैच क्रोकोडाइल फ्रॉम द लेक और समथिंग, आई डोंट नो। बाल नरेंद्र मोदी, ठीक है। यही रीजन है मेनली। तो वो तो मैंने आपको समझाया था, बिकॉज 2000 क्राइसिस के बाद से देयर इज अ हेट्रेड ऑफ एलीट। तो ही वांटेड टू शो दैट राहुल इज शहजादा, आई एम चाय वाला। हाँ, ही सर चौकीदार ने से चौकीदार चोर है सच्ची मुच्ची। चलिए ठीक है। तो there are two questions that he has raised quickly, the Maratha। हाँ वही है, they were involved in agrarian activity, but they consider them as warrior community. Who made this? Who made them to believe this, that they are a warrior community? Britishers. After 1857 revolt, Britishers instituted two community because they thought that unity among Hindus could be dangerous. So first they divided Hindu Muslim. If you see the genesis of Hindu Muslim violence in India, it started with Britishers having a policy of divide and rule. Second thing they instituted was a concept of martial race, something they call वॉरियर कम्युनिटी। दैट्स व्हाई आर्मी में रेजिमेंट कैसे होते हैं, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपूताना रेजिमेंट्स। दे सेड दैट सम कास्ट आर बोर्न वॉरियर, दिस इज व्हाट ब्रिटिशर्स गेव देम। अब है, मैं जब बनाया गया था तब की कह रहा हूँ। हाँ, जब ये बनाई गई थी ना रेजिमेंट, दे वर द एंटायर पर्पस ऑफ दोस रेजिमेंट वाज फॉर अ पर्टिकुलर कास्ट। अब नहीं है, अब तो डिफरेंट है, बिकॉज नाउ इंडियन आर्मी ऐसा वर्क नहीं करती, बट रेजिमेंट नेम सेम हमारे भी। सिख रेजिमेंट में क्या नॉन सिख नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। बट द थिंग इज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सिक्स वर देयर। इट वाज क्रिएटेड, ब्रिटिशर्स ट्राई टू डिवाइड हिंदूज इनटू कास्ट, दैट्स व्हाई दे क्रिएटेड दिस कांसेप्ट ऑफ वॉरियर कम्युनिटी, समथिंग दे कॉल मार्शल कास्ट और मार्शल रेस। ऐसी दुनिया चलती है। चलिए फाइन, दिखाइए आप कौन सा दिखा रहे थे। कौन सा वाला? ये होल्डिंग ईच अदर अप, होल्डिंग ईच अदर अप, एक दूसरे को पकड़ के चलो विद कंसेंट। ये किस पे है, इनइक्वालिटी पे है। तो आपने GII क्यों लिखा? तो इनइक्वालिटी पे होगा ना फिर ये। देख, as far as I can see, it is basically with respect to, मुझे ये लग रहा है, it is basically with respect to inequality in the society। एक सेकंड, just give me a second। क्या तकलीफ है?
इनोवेशन पे ही. हाँ, so first thing you would so first thing you extracted was global innovation index. Global Innovation Index 41 in 2023 out of 130. Niti Aayog's Atal Innovation Mission. Under it, Atal Tinkering Labs established in the middle and high school objectives. ठीक है. Challenges for ATL infrastructure, uniform and effective utilization solution by Niti Aayog. ATL cooperatives. ATL, what is ATL? अच्छा, अटल टिंकरिंग लैब्स cooperatives. Okay. ATLs are it is a cluster of ATLs guided by a committee comprising of teachers, student mentors, and principal observation. More presence, less attendance of teachers and student challenges. ठीक तो लिखा है? हाँ, ठीक तो लिखा है. So that is how you have to extract few points you have extracted. But again, it is useless if you are not putting it to the right notes. Because आप ऐसे बनाते जाएंगे तो बात नहीं बनेगी. For example, wherever you have written about employment, unemployment scenario in India. So previous day's article and this article must go in that chapter. Okay, and over time, I'm guaranteeing you 80% of the content in newspaper is repeated content. There is always one or two points which are innovative. That's why I told you classroom programs cover 80% of the content. 20% of the content comes from test series and newspapers. ठीक है, फाइन. एक बार डिजिटल भी देख लेते हैं. एनीवन एल्स को दिखाना चाहता है तो फिर इनका भी देखते हैं. आई थिंक निकांत आई थिंक ये क्या है, एक पेपर है. स्वर्ण श्रीवास्तव आपका ये तो भेजा हुआ. ठीक है, सोहम यू सेंड वन. आई विल जस्ट चेक इट. गिव मी अ सेकंड. हाँ, दिखाओ कौन सा. बायोस्फीयर रिजर्व. ओके. ये पढ़ाया जाता है उसमें. करंट अफेयर्स में एनवायरनमेंट में आपका 80% ऑलरेडी कवर हो. साइंस में नहीं, ज्योग्राफी में यूजली कवर करते हैं. वैसे कवर करने को तो एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट. बिकॉज एनवायरनमेंट डिजास्टर कम्स इन GS3, ज्योग्राफी तो GS1 है. बट ठीक है, दीज आर ओवरलैपिंग सब्जेक्ट, तो कोई भी पढ़ा सकता है, कोई इशू नहीं है इसमें. ये कि न्यू साइट्स हैं जो 3 साइट आपने रखी है. ये स्कॉलर का नाम लग रहा है मेरे को तेरे. बीनो बोयर सृष्टि को. मैं कह रहा है 3 साइट्स आ गई. यूनेस्को न्यू दिल्ली. ये किस लिए लिखा आपने यूनेस्को? Okay, fine. They work there. Okay, 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 okay. And you have not written what is UNESCO? कहाँ लिखा है? क्या दोनों ने सेम पे ही किया है क्या? ये आपका है? तो जैसे फॉर एग्जांपल इफ अ न्यू इंस्टीट्यूशन नेम कम, तो हैव जनरल आइडिया. मैंने आपको हमेशा समझाया, हैव सम जनरल आइडिया. जैसे यूनेस्को, व्हाट इज यूनेस्को? ठीक है, व्हाट इज दिस पर्पस? 2 to 4 लाइन एट मोस्ट, नॉट डीप डिटेल्स. इसमें इसमें आई डोंट थिंक यूनेस्को कहीं पर करवाया जाता है प्रॉपरली. आई थिंक कवर रेफरेंस आ सकता है यूनेस्को का, बट कवरेज नहीं होगा जाता है. You've written 3 roles: protect diversity, reduce pollution, and enhance climate resilience. Biosphere is a core buffer and transition. India 12 Biosphere is an initiative. Sundarban Biosphere is a Gulf of Mannar. 4 तो very common है, सबको पता है. या अच्छा, इस तरफ. वो तो इस साइड से लिखो ना फिर. मैन बायोस्फीयर रिजर्व, द एशियन मीट इन चेन्नई. थीम. थीम भी लिख के आपने रिज टू रीफ से लिखा है. रिज टू रीफ. या आपका भी इसी पे है?
नहीं सर मिला मैंने कुछ और था हमास से रिलेटेड था लेकिन ये कर दिया 12 आपने 13 लिखा है शायद। 12 है नहीं 12 लिखा था, 12। साउथ एंड सेंट्रल एशिया बैच पर नेटवर्क मीटिंग। प्लास्टिक चेक पॉइंट्स, व्हाट इज दिस प्लास्टिक चेक पॉइंट्स, कहीं लिखा है? सर ये कम्युनिटीज मिलके गल्फ ऑफ मन्नार में प्लास्टिक हाँ चेक करते हैं एंड उनसे प्लास्टिक लेके रोड्स कंस्ट्रक्ट करने का रिसाइकल करके रोड्स कंस्ट्रक्ट करते हैं प्लास्टिक चेक पॉइंट ठीक तो है, तो इसमें वन लाइन आप लिख सकते थे, लिखा है कहीं पे? पीछे लिखा है अच्छा हाँ आपका इधर है, sorry। हाँ प्लास्टिक चेक पॉइंट आपने लिखा है ना, वन कम्युनिटी मेंबर्स चेक ऑल व्हीकल्स एंड टूरिस्ट फॉर प्लास्टिक वेस्ट विच कलेक्टेड रिसाइकल में, सही तो है। एशियन मीट एट चेन्नई मैन एंड बायोस्फीयर इज अ प्लास्टिक चेक पॉइंट, ठीक है। बहुत पॉइंट है, काफी एक्सट्रैक्ट कर लिया आपने वैसे। आई टोल्ड यू इसमें 2 लाइन ही सिर्फ आपको ऐड करनी थी, बाकी सारा क्लासरूम में है। हाँ ये ट्रांजिशन रूम वाला तो पूरा कराया 2 लाइन एट मोस्ट ऐड करनी है, ये आपका था सर। ये वाला है ना। चलिए सो हम लेट मी लुक एट योर ऑल्सो। ट्रांसबाउंड्री साइड क्या होगी ट्रांसपोर्ट से ट्रांजिशन होगा कहाँ पे? ट्रांसबाउंड्री साइड 134 कंट्रीज एंड ट्रांसबाउंड्री साइड ये मैं बताता हूँ जैसे दो दो कंट्रीज हैं फिर उसके बीच में बॉर्डर में अगर कोई बायोस्फीयर रिजर्व है दोनों मिलकर उसके साथ काम करेंगे जॉइंट गवर्नेंस, एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी, कोर जोन, बफर ट्रांजिशन। हाँ ठीक है सोहम, यू हैव रिटन फाइन बट देयर few things you could add. First of all, a bit about what is UNESCO, one line maybe. Then next is reef to ridge to reef is good, and then some terms that they point out. So also focus on terms also, because understand UPSC often asks terms in prelims. Which of the following means? For example, they numerous time ask what is ADR, what is this, what is that. ठीक है, बाकी तो ठीक। चलिए फाइन, एनी अदर आर्टिकल एनीवन हैज टू शो? हो गया सबका? हिंदू थोड़ा लेफ्टिस्ट बायस है ना। Clearing the dust, lifting the haze. Mumbai's municipality need to catalyze innovation, sensitize builders, provide them information to construction emission. अच्छा, it is with respect to pollution. Nawaz Savi. नहीं, just look at the heading. If something is important, read it. Otherwise, scrap it. Nawaz Sharif homecoming is potentially significant for Pakistan's politics, but not its polity. It is not likely to transform the contours of its foreign security policy, especially obsession with India. Yeah, if you want to read, you can read a Kazri read, not more than that. बाकी कुछ है नहीं, because it is with respect to Pakistan's internal politics. हमारा कंसर्न नहीं है, मीडिया का कंसर्न हो सकता है, बट हमारा कंसर्न नहीं है। अवर कंसर्न इज, मैंने आपको बताया आईआर में दिस जनरल रूल, anything in which India is not involved or India's interests are not involved, not your concern, and their domestic politics is not your concern. Only thing you need to know, maybe 1 or 2 lines, what is the domestic scenario and how it impacts India. अब उनका पर्सनल क्या चल रहा है, कौन कैसे गाली दे रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बिकॉज यूपीएससी पूछेगा नहीं। कंट्रीज, आईआर 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 दिल्ली का जो पोल्यूशन इतना ज्यादा तो गवर्नमेंट ऐसे मेजर्स के लिए प्राइवेट व्हीकल्स को बंद कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन दिल्ली इज क्वाइट गुड बट पीछे वाला फैसला लगाया ना नहीं, फाइन लगाया पर एक और प्रॉब्लम भी है, इट इज हार्ड, क्योंकि इतने सारे व्हीकल्स अभी सरकार पे नहीं है। इफ दे क्लोज ऑल प्राइवेट व्हीकल्स तो कहाँ से लाएंगे इतने पब्लिक व्हीकल्स, होने भी तो चाहिए। बट नन द लेस इट कैन बी डन। वैसे मैं तो हमेशा कहता हूँ दिल्ली इज अ सिटी जहाँ पे प्राइवेट पर्सनल व्हीकल बैन हो ही जाने चाहिए। इट शुड रन बाय ओनली कमर्शियल व्हीकल्स ओनली, बट देन यू हैव टू इंक्रीज देयर अवेलेबिलिटी। उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ाइए, पर सरकार के पास समझिए ना यही काम नहीं बचा है ना।
अब इतना पैसा इफ दे इन्वेस्ट इन मान लेते ट्रांसपोर्टेशन में, दे विल बाय व्हीकल्स एंड ऑल, सबसे बढ़िया। ऑफ कोर्स हो रही है, पर स्लोली होगा, इमीडिएटली नहीं कर सकते हैं, हो सकता है जब आप बूढ़े हो तब तक हो जाएगा, बट द थिंग इज अभी करेंगे क्या, पॉसिबिलिटी नहीं है ना, गवर्नमेंट हैज अदर एक्सपेंडिचर्स आल्सो, कहाँ से करेंगे, डेवलपिंग कंट्रीज हैव लिमिटेशन ऑफ मनी एंड अभी तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, उससे पहले किसी और की गवर्नमेंट थी, आई थिंक कांग्रेस की थी। कांग्रेस तो ये आम आदमी पार्टी की जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, इन्होंने क्लेम कर दिया था कि पॉल्यूशन इन दिल्ली इज बिकॉज ऑफ द फरारी बर्निंग इन ओवर पंजाब, उन्होंने कहा कि दे आर रिस्पांसिबल फॉर द पॉल्यूशन ओवर देयर। अब उनकी गवर्नमेंट है, अब कुछ नहीं कह रहे। हाँ तो पॉलिटिक्स, हाँ तो मैंने बोला पॉलिटिक्स रन्स दिस वे, मैं कहना पॉलिटिशियन आर बॉर्न हिपोक्रेट्स, ऐसा कौन सा फैमिली है फैमिली है तो नहीं बोलोगे you cannot survive in politics without a little bit of hypocrisy. Negative नहीं, understand it is not negative, if I'm stating something which is fact is fact, fact positive negative नहीं होता, fact fact होता है। आप कैसे करेंगे, आप बताइए, आपको if you want to remove someone from power तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा, उसके लिए you have to spread things, कुछ सच होगा कुछ मिर्च मसाला होगा उसमें चलिए anyway क्लियर, सो हम चलिए फाइन देन, चलो खत्म करते हैं फिर, दिस इज व्हाट वी हैड फॉर टुडे। टुमारो फिर, टुमारो तो है नहीं, टुमारो वी विल हैव अ करंट अफेयर्स प्रॉपर क्लास, ठीक है, इन द मॉर्निंग, बाकी देखते हैं मंडे से इफ द क्लास विल कंटिन्यू। हाँ दिवाली के चक्कर किसका मेन न्यूज किसमें, अच्छा इसमें एनवायरनमेंट का थोड़ा कवर किया है, एलिफेंट रिजर्व्स वगैरह कैसे होते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, सिटीज एक्ट, सही है ना, खाना भी चाहिए होता है, इसलिए इंडिया हैज अ इमेज, इंडिया को ऑफन इज नोन एज एलिफेंट, इंडिया इज रिगार्डेड इन इंटरनेशनल अफेयर एज एलिफेंट, व्हाई, बिकॉज एलिफेंट इज द एनिमल व्हिच नीदर ईट्स एनीवन नॉर गेट ईटन बाय एनीवन, एलिफेंट को भी खाता भी नहीं है पर वो भी किसी को नहीं खाता, दैट्स व्हाई इंडिया इज, मतलब इंडिया हैज दैट इमेज कि वी नेवर अटैक एनीवन बट वी नेवर टॉलरेट अटैक आल्सो, उस तरह का इमेज वाला है, चाइना का ड्रैगन का इमेज है, फायरी, ऑलवेज वेमिंग आउट फायर, हाँ हाँ बिल्कुल, अपने घर से ही तो लाएंगे वो इतना कुछ भी, इट्स नॉट feasible 30 ट्रिलियन, देयर इज लिमिटेशन टू ग्रोथ, व्हेन यू विल स्टडी आईआर, उसमें सॉरी एनवायरनमेंट में पढ़ाया जाता है, देयर इज लिमिटेशन टू ग्रोथ, एक इकोनॉमी नेचुरल रिसोर्सेज की लिमिटेशंस है, कितना ग्रो कर सकते हो आप, हाँ वो बात अलग है, इफ वी कैप्चर मार्स एंड देन वी 40 ट्रिलियन तो समझ में आता है ना, पॉसिबल नहीं है, 30 ट्रिलियन कुछ भी हो सकता है, मे बी देयर इज अ न्यू गॉगल्स इन द मार्केट कॉल्ड भक्त गॉगल्स, you wear them and everything appears good and है, कुछ भी हो सकता है, 30 नहीं होगा, 30 तो बहुत ही ओवर एग्जैजरेटेड है, किसमें, वो एक अलग बात है, प्लान है ना, प्लान तो बहुत होते हैं हमारे पास, हाँ, अभी तो हम मार्स भी कब्जा लेंगे, यूनिवर्स का नाम भी बदल के हम ग्रेटर वही मैं कह रहा हूँ, 30 ट्रिलियन का टारगेट अचीवेबल नहीं है, सबको पता है, बट नॉनदलेस इट क्रिएट्स अ गुड हेडलाइन, टारगेट ऐसा बनाओ कि हेडलाइन बन जाए, हो ना हो देखा जाएगा, चलिए बाय बाय, मिलते हैं, बाय बाय ऑनलाइन पीपल, तो हम एंड तो सी